I just confirmed that some of you are from final year, and some of you are quietly aware about what is cybersecurity and what is ethical hacking actually is. Okay, but we will be the go through whole from the scratch and from the beginning, so all of you can understand what is actually cybersecurity is. Okay, so before I start, can anyone claim that their data is secure right now? Like कोई तुम में से बता सकता है या फिर confidently बोल सकता है कि तुम्हारा data secure है? Raise your hands if you think your data is not get accessed by anyone else than you. मेरी आवाज आ रही है? I'm audible? Hello, am I audible? Okay, so basically, I will be sharing one PPT with you guys, and we will go on afterwards. Hmm. Yeah, fine. Okay, my screen is visible to all of you. So basically, what is cybersecurity and what is ethical hacking is. Okay, so how secure you are online? Like all of you are must be using all the network devices, smartphones, social medias, online banking, and public Wi-Fi's. Okay, but uh, are you think that is safe to use, or it is safe to use all these public Wi-Fi's without any concern? Can anyone tell me like how secure your data and how safe you are online? So basically, here cybersecurity terms comes in. Okay, so basically तुम लोगों को भी पता है like तुम्हारा जो डेटा है वो ऑनलाइन इतना सिक्योर नहीं है. There is must be someone trying to access and get hands on your data. Okay, to prevent that, the cybersecurity terms come in a picture. Okay, so what is cybersecurity? Cybersecurity is basically protection of your computers, network servers, and data that are stored in the servers. Okay, so basically, what cybersecurity does, they defends against cyber attacks, unauthorized access, and data theft, damage damages that can affect your data and their credentials that can be stolen again and used against you. Okay, so from preventing all these threats, the cybersecurity terms comes in. So as a cybersecurity expert, or as a as a no one, or as a educated person of cybersecurity, you have to understand how to tackle all these scenarios, like how to defend against attacks, how to prevent the unauthorized access, and how to prevent the data thefts from our system. Okay, clear? So why cybersecurity is important? Okay, so basically cybersecurity is important because all of our current environment are dealing with the online things. Like we are paying online, we are storing our balance online. Okay, we are getting extracting our data and our transactions online. Okay, so we are using digital mediums in a rise online transactions, increasing data breaches and ransomware attacks, and protection of personal and financial data. Like, so we are seeing that our transactions are doing happening online. Okay, our data is stored online and that are getting breached, and people are trying to blackmail you against your data. Okay, protection of personal and financial data. So there is a high
high chance that some of your crucial data that can be stolen. To prevent that stealing, the cybersecurity expert comes in. They charge you for protection of your own data. Okay, national and national and business communities are also use cybersecurity as a potential field or potential role to prevent their data from getting stolen. Okay, now let me see what is hacking. Okay, so basically in previous life, or sorry, not previous life, in past, uh, we used to think that stealing happens when someone or some people or third party entity will try to steal your important things from your home, or steal your gold from your home. But in the world of AI and world of technology growing, what is gold? It is your data. Your data can be work more crucial than the gold in nowadays. Okay. Okay. So if someone have access of your all data, they can do whatever they wish with those data. So basically, what hackers do? Hackers try to find the weaknesses in your system and try to do some malicious activities with your data. Okay, so let's go with this term hacking in more detail. So what is hacking? Hacking is finding the weaknesses in your system and trying to get that access of your system. It can be done for the good purposes or for the malicious purposes. So basically, all hackers are not criminal, but some of them are, surely. So what are the types of hackers? What are common cyber attacks? What is ethical hacking? What is ethical hacking? What are the tools that are used by ethical hackers? We will going to see all of this in these sessions. Okay, so let's go with the first thing. What is hackers? What are type of hackers? So in recent community, we have almost five types of hackers. Firstly, white hat hackers, hat hackers, gray hat hackers, script kiddies, and state sponsored hackers. Okay, so what are the white hat hackers? So basically, you all are aware with term ethical. Ethical means, can anyone tell me what is ethical? You have to unmute. I can't switch to chat. So, any of you, what is ethics? Authorized. No, authorize is a different thing, and ethics means anyone. So, you all around from last semester and from technical field, right? And ethical is just a simple term. You just have to tell me what is it. Ethics. What are ethics? Means by following some rules and regulations. Yeah, good. So, what are the white hat hackers? They are okay. So basically, hat hackers are the hackers who do the things in under some rules and regulations. Okay. So basically, they are kind of hackers. They will try to find the vulnerabilities of your system. They try to get the access of the system. They will try to identify. हाँ, so they will okay. So वो लोग क्या करता है basically ethical hackers? बेसिकली वो लोग हैकिंग ही करता है। दे वो लोग वनरेबिलिटीज ही फाइंड करता है, वो लोग बैकडोर्स ही फाइंड करता है तुम्हारे सिस्टम का। बट वो लोग क्या करता है, वंस दे डिस्कवर दैट बैकडोर, उनको जब भी वो आइडेंटिफाई हो जाए, बैकडोर आइडेंटिफाई हो जाए, वो क्या करता है, दे विल रिपोर्ट इट टू द ऑथराइज पर्सन अबाउट इट। ओके, सो दिस इज द मेन रोल ऑफ एथिकल हैकर। इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली? सपोज कि आई हैव क्रिएटेड वन वेबसाइट, ठीक है, मैंने वेबसाइट बना ली now, and I publish that website on a deployed environment, okay, or production environment. But after a few days, some ethical hacker and find tried and finded one vulnerability in my website. Okay, so now what he will do, he will report that vulnerability to me, and and try try to tell me some solution to prevent that vulnerability. Okay, and to try to close that door. Okay, now are you guys are aware about what is door when I say door? Okay, anyone?
So in our terminology, door basically a way to get access of your system. Okay, समझ रहा है ना? आई थिंक यू गॉट दैट पॉइंट. सो बेसिकली एथिकल हैकर क्या करता है, वो ऐसे जो ओपन पोर्ट्स होता है या फिर ओपन डोर्स होता है, जो वनरेबल पॉइंट्स होता है, उनको एक्सप्लोर करता है एंड उनको रिपोर्ट करता है टू द authorized person about it. Clear? So that is the key role of ethical hacker. Now, black hat hacker. Okay, so basically, black hat hacker are the hackers with a malicious intent. Okay, so they don't follow any rules, regulation, or boundaries. Okay, so if any black hat hacker got to know the vulnerability or weakness of your system, what he will do? He will try to exploit that vulnerability and try to access your system or try to damage your system. सो दैट कैन बी डन फॉर द मलेशियस इंटेंट, मतलब वो उसके इंटेंशन ही गलत हो सकता है, या फिर वो सिंपली वो इसलिए कर सकता है कि जिससे वो तुम्हें कोई ना कोई तरह से डैमेज पहुंचा सके. सो दैट इज द की रोल ऑफ ब्लैक हैकर. ओके, so we can also charge some amount from you to do this, or because of this attack, or because of that breach. Okay, to relieve your system again. So now gray hat hacker. So gray hat hackers are competitively can be ethical or unethical. Okay, they are hacker of their choice. So they can be work maliciously, but they also can work as a ethical also. So suppose I am a gray hat hacker. Okay, so if I find like some vulnerability of someone's system, and I understood that that can be breached by unethical hacker or black hat hackers for a malicious intent. So I have two choices. I can, as a gray hat hacker, I can report that vulnerability to authorized person, or as a black hat hacker, I can breach that vulnerability and ask for some ransom to free their systems. Okay, so gray hat hacker can be partial. He can be ethical or unethical. Clear? It is depend on situation. Script kiddies. So script kiddies are basically a beginner or some newbies who are trying to use the tools and some predefined tutorials without knowing actual workflow of that system. Suppose you guys are aware about phishing. Phishing क्या होता है, तुम लोगों को पता है? Yes, sir. Okay. Can anyone tell me what is phishing? By sending fake mails, the or links, the Okay, scam good. is done. So basically, phishing क्या होता है? When some entity try to pretend as some other entity. Okay, so in that case, we can consider it as a phishing event. Okay, so suppose Instagram, all of you have used it, right? So some assume someone is using same domain as a Instagram. Okay, and but he's created that domain for his malicious intent. Okay, and he's trying to use that domain to following some tutorial, like ऐसा तुम लोगों ने सर्च किया होगा हाउ टू हैक इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ लोग अपने यूट्यूब पे वीडियो डालते होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करो यूट्यूब, यू कैन हैक दैट इंस्टाग्राम. ओके, so basically these type of people who follow some tutorials on scripts by manually, दे कैन बी कंसिडर एज अ स्क्रिप्ट किडीज. उनको नॉलेज नहीं होता कि एक्चुअल में सिस्टम कैसे वर्क कर रही है, एक्चुअल में डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, हाउ दे आर गेटिंग दैट पासवर्ड, और हाउ दे कैन ब्रूट फोर्सिंग दैट cracking that password. They don't have any idea about it, but they just following the steps and trying to get hands on the goal. Okay, so they can be considered as a script kiddies. State sponsored hackers. So now in a cyber warfare, state sponsored hackers are placing important role. Like, okay, suppose there are two countries which are involved in a cold war. Okay, so they can't attack each other directly, but they what they do, they try to steal the data of the citizens of other country and try to threat them. Like they can damage them financially, they can sell their data, or they can just destroy their system by putting some minor attacks or some minor malwares in their system. Okay, so they can also try to get hands on the data of the higher peoples.
like a politicians, like a army officers. Okay, so if they can access the data of these peoples, they can use these data against any nation to prevent and or to get the understanding of the, okay, the defense or the devices they are using. So there, for that purpose, state use the hackers to perform these activities. Okay, so they can be considered as the state sponsored hackers. Clear? Okay, so these are the common attacks that can be generally used to damage the system. Okay, so phishing is one of them. I have discussed phishing. Okay, so should we try phishing? Okay, and after continue other slides, or should we complete these slides and afterwards we should start attacks? Yeah. Okay, we are going with fishing first. Okay, so now I have already told you that how fishing works. फिशिंग कैसे वर्क करता है वो तो मैंने बता दिया. क्या होता है फिशिंग में? कोई भी एंटिटी, कोई भी पर्सन होता है, वो प्रिटेंड करता है टू बी द सम अदर पर्सन. ओके, मतलब सपोज कि माई मेल आई डी इज like xyz at the rate xyz123 at the rate gmail.com. Okay, so what will the phishing attacker do? They will create the id with the same name. Now we all know कि same name से id create करना तो possible है नहीं, right? Because they all kind of have their different name. So to avoid that, what the attacker do? They create almost identically similar ID like that. Suppose I am attacker and I want to do phishing with a mail. So what will I do? I will create the mail with the same name of company. Okay, and I will send the my malware or trojan with that mail. Clear? So what will generally normal people will see? They see the, okay, this is mail from Microsoft or this is mail from Deloitte. It should be authenticated mail. Okay, and they proceed with it. So it is way easy to get access of the or get attacked on the system of with this type of attack. Okay, so let's go and understand how phishing works. Okay, or let's try one small attack with phishing. uh, my terminal is visible for you. Can you see this terminal? Hello? No, sir. Yeah, so basically we are just using one pre-created repo for phishing. Okay, we can also create this uh, the phishing server by ourselves with help of some scripting, but we don't have that much time right now, so we will just using any phishing repo that is available on site right now, on git right now. Okay, so I have already installed this repo, that feature. And if you any of you are doing this practical with me, they can join with that system and try to do it with me. Okay, so basically what we have to do for this, we have to go to this repo, then we just have to clone this repo in our system. Okay, so we are using linux right now, right? So for that, okay, I have using mint, but it is similar as a linux. So we have to just copy this repo and clone this repo into our system. Okay, so we can just type that repo here, and okay, and we can install that feature tool and or repo or script in our system. Okay, so I have already We created are that not repo. able to see the screen. Okay, okay, it is visible right now. No, It is, or it is small. it's not visible. Okay, let me try.
Okay, is it visible now? Yes, sir. Okay. So, so basically, this is my directory. I'm changing it to home, and where is okay. So I have already installed that Git repo in my system. It called as Zfisher. Clear. So I am just accessing that repo right now. So these are all the files that is currently available in this repo. Auth file, doc file, the license as a deb.sh file, readme file, and run docker file. But we are using this zfisher.sh file. Basically, sh stand for executable file. Okay, so we will just run this file. So basically, that command was to run phishing file. Okay, so we can do this many of phishing attack with help of this tool. So we can do phishing with the Facebook, Instagram, Google, Microsoft, whatever we can choose. Okay, so I think we will go with the Instagram for now. So we just have to choose any option we needed. So let's go with a traditional approach. So let's see. Here we have multiple options like traditional Google page login, okay, to get a login credential, or we can bait them, okay. So, we know that there are lots of people claiming that they will raise your followers on Instagram, right? Or they will increase your likes or reach by doing some things, okay. So we can use any of these kind of baits to get the attention of user to click on a link. Clear. So now we will going with a traditional approach, and we are currently running on a local host. I can't display you on a cloud host for now, but you can export this phishing attack on cloud, or you can also use local expose. So for local expose you can use your git repo to deploy temporarily that site. Sir, your voice is So breaking. hello, am I audible now? Yes. Yeah. So basically, we are hosting it on localhost. You can go with anything Cloudflare or local expose. So it is so basically what will be happen if I deploy it on localhost. I can access this trapping with phishing attack on only my system. Okay, but if I deploy it or try it with a cloud host, I can I can use this website on a different systems, but it is not ethical to do with concern. Okay, so you can be in trouble if you do that and get caught. Okay, so see what they are asking now. They are asking what a custom port you want to use. Okay, but I don't think we need to use custom port for now. Let's do with ATT. So this is my custom port for this website right now. Okay, so now generally what we do control shift C to copy this, but if you will do that right now, what will happen? It will it will basically exit your terminal for now. So see, we got exactly same page as Instagram login page, right? But we can do one thing, we can change this DNS as we want. Okay, so did you heard about DNS phishing? Hello, hello, are No, you sir. aware about term? Okay, so basically what is DNS phishing? So we all know what is DNS. Are you aware about it? No. No. So basically, DNS are considered as a domain name system. Okay. So basically, we all know.
हमारी जो भी वेबसाइट्स होती है ना, लाइक हमारा कंप्यूटर होता है, वो डायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज तो नहीं कर पाएगा जैसे हम नाम रखते हैं. Okay, they will always remember our website with some IP address. Okay, so that IP address is considered as the actual domain IP. Okay, so there is DNS service that is provide the different individual IPs to each domains. Clear? So that is basic work of DNS. And with help of DNS phishing, what we can do, we can give different name to domain for a temporary moment. So basically, if I take it as an Instagram, okay. So Instagram is already is taken by different IP. So let search public IP of that DNS. Sorry, Instagram. Okay, so this will be my domain name. So if I want to get IP of this domain, so basically it is also prevented by many security layers. Okay, so it is not possible that we will get actual IP. We will generally get public IP of the honey proxy. Okay, or pot honey pot. मतलब dummy servers. We can mainly gonna see visibly see that IP right now. It is not actual IP of. So see, so basically what we are having here the server IP of Instagram.com, and okay, this is address that we are seeing right now, but it is not like it is actual address that is Instagram using. It is proxied by lots of layers, or ha, you got the point, right? समझ आ रहा है ना कि ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं हम लोग. सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है, सो देयर इज़ वन कमांड कॉल एनएस लुकअप. इसका पर्पस क्या होता है, जो भी डोमेन्स होती है, वेबसाइट्स होती है, उसके आईपी एड्रेसेस हमें प्रोवाइड करना. क्लियर? वी कैन फैच एनी आईपी एड्रेस विथ हेल्प ऑफ एनएस लुकअप. क्लियर? So what we can receive the server IP address, and the IP address of that domain. But the big company or the big companies or professional companies, what they do, they always mask their original domain name with these different proxy layers. So whenever we try to get the actual IP address, what we will get temporary fake IP of fake domain or fake server of that company. Okay, so that's how they are protecting their original server or original system. Clear? होप थोड़ा समझ आ गया होगा. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू आर फिशिंग अटैक. तुम्हें ये तो समझ आ गया ना कि डीएनएस क्या होता है, कैसे वर्क करता है. हेलो. Yes, sir. या सो बेसिकली जब डीएनएस फिशिंग हम करता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो भी हमारा ये हमने टेम्पररी सर्वर बनाया है ना, जो टेम्पररी, हाँ, जो लॉगिन पेज बनाया है फिशिंग के लिए, उसको हम सेम नेम से डिस्प्ले करवाता है एज अ जेन्युइन साइट. ओके, so that's how DNS phishing work. Yeah, so if I write here some random username and password, okay, and when I try to log in this page, what will happen, it will redirect me to the original page. Okay, अगर मैंने यहाँ पे राइट आईडी और पासवर्ड डाले होते तो क्या होता, वो मुझे डायरेक्टली लॉगिन करा देता ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे. क्लियर? See, what is my domain name right now? Instagram.com. What was it before? Our localhost IP, right? समझ रहा है ना? देखो यहाँ पे है ना, हमने जो लोकल होस्ट का, अब तुम लोगों ने देखा और 27.0.8 ऐसा कुछ था ना, 8080. इट वॉज आर लोकल होस्ट IP. बट हमने जब अटैक सक्सेसफुली हो गया, तब ये IP चेंज हो गया. क्या हो गया? ओरिजिनल इंस्टाग्राम का जो डोमेन नेम था वो हो गया ना.
Okay, so basically what it does, he this phishing attack redirect us on a original login page of Instagram afterwards completion of this अटैक. ओके, सो जो विक्टिम होता है उसको कभी पता ही नहीं चलता कि उसने किसी फेक प्लेस पे अपना आईपी डाला हुआ है. एंड व्हाट वी आर रिसीविंग हियर, वी आर रिसीविंग हियर username and password which is inserted in that phishing domain or phishing place. क्लियर? समझा कैसे वर्क किया ये? हेलो. Yes. हाँ, सो बेसिकली इस डोमेन पे हमने जो फेक आईपी नेम यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था, इट इज जस्ट गिव दिस आईपी एड्रेस एंड पासवर्ड, मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड. क्लियर? सो ये कैसे किया बेसिकली, हमने एक डमी स्क्रिप्ट रन की जिससे क्या हुआ, जिससे ऐसा ऐसा प्रिटेंडिंग सर्वर बनाया हमने जो इनकमिंग डेटा को स्टोर करे. ठीक है, टू स्टोर अकाउंट एंड पासवर्ड. सो बेसिकली की लॉगर्स पता है तुम्हें की लॉगर्स क्या होता है? No, हेलो. sir. नो. सो की लॉगर्स बेसिकली ऐसे ही स्पाईवेयर्स होता है जो क्या करता है, तुम्हारी ईच की स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करता है. सपोज कि कोई अगर विक्टिम अपने कीबोर्ड से हेलो लिख रहा है, तो क्या होगा, वो हेलो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे डमी सर्वर पे, जिससे मैं उसकी ईच एंड एवरी इवेंट को स्पाई कर पाऊँ. क्लियर? सो दैट्स हाउ कीलॉगर वर्क्स. सो सेम इन सेम दैट वे फिशिंग अटैक में क्या होगा, जब भी यूज़र कोई भी क्रेडेंशियल या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग जो जो उसका हमने जो फिशिंग सर्वर बनाया था या फिशिंग डीएनएस बनाया था उस पर डालेगा, तो वो सीधा हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा. तो नाउ वी कैन यूज दिस क्रेडेंशियल टू मैनिपुलेट द एक्चुअल क्रेडेंशियल ऑफ यूजर. तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं ये एक्चुअल वाले जो क्रेडेंशियल है वो ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे डालूंगा एंड आई विल चेंज हिज पासवर्ड. इट इज दैट इज क्लियर. दैट्स हाउ फिशिंग वर्क. कोई डाउट है इसमें? नो, आई गेस नो. हेलो. Yes, sir. Okay, so let's go for the uh, in the PPT. So what was password attacks? Password attacks basically क्या होता है, brute force होता है. Suppose so are you guys aware about social engineering? नहीं. बेसिक आइडिया होगा ना सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? Okay, it's fine. So let go further and wait. We'll back on this attack slide afterwards. So these are the basically phases of ethical hacking. क्या होता है? रिकॉनेंस होता है, स्कैनिंग इन्यूमरेशन होता है, गेनिंग एक्सेस होता है, मेंटेनिंग दैट एक्सेस होता है, covering all the tracks of attacks and reporting all the steps to the authorized person. These are the 6 steps for ethical hacking. ठीक है. सो रिकॉनेंस में क्या होता है, रिकॉनेंस मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना, मतलब जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना फ्रॉम द यूजर. लाइक वी कैन कंसिडर इट एज अ, सपोज कि देखो कोई भी अटैकर है, सपोज कि तुम अटैकर हो, ठीक है, और तुम्हें किसी के सिस्टम पे अटैक करना है, तो उसका कोई पर्पस तो होना चाहिए ना. तो तुम ऐसे ही किसी भी रैंडम पे जाके ऐसा अटैक नहीं कर दोगे ना कि हाँ भाई चल तू बैठा है यहाँ पे, आई विल ब्रूट फोर्स यू और आई विल डॉस ऑन यू. ओके, ऐसा डायरेक्टली तो तुम नहीं करने वाले हो ना. इट शुड बी डन विद सम एम, सम गोल फ्रॉम योर साइड, राइट. मतलब तुम्हारा कोई एम रहेगा कि तुम्हें, हाँ, लाइक यू कैन बी डू इट फॉर द पर्सनल ग्रजेस और यू कैन डू इट टू कलेक्ट रैंसम. ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना कि उसके पास पैसे भी है. So basically, information reconnaissance means to collect enough information about any user that can you use as a benefit. ठीक है, तो social engineering is one of the part of the information gathering. ठीक है, we can do information gathering using Nmap, Netcat, then Zenmap. These all are the tools that can be used for the information gathering.
Metasploit also can be used for that, and you also use, there are some other tools too, but some of them are paid. But these are the nmap, and these are the tools can be used for the information gathering of on the network. Clear? Social engineering में क्या होगा? Suppose कि there are two friends, okay, and assume it is Ram and Sham. So one day Sham decided to attack on Ram, but Sham is from नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, उसको तो ब्रूट फोर्स या फिर ऐसा कुछ पता है नहीं. वो क्या करेगा इस टाइम पे? ही विल ट्राई टू क्लोज द डिस्टेंस बिटवीन राम. ओके, वो जितना हो सके उतना राम के पास जाएगा, एंड ही विल try to speak on his data, like he can just see the password of the ram and use that password afterwards for the malicious intent. So that can be considered as a social engineering. So it, the social engineering is also can be done as, suppose कि तुम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, clear, and you are there seated as a candidate, and for brief moment you took the access of their Wi-Fi. clear? तुमने उनका वाईफाई का एक्सेस लिया with ask with their permission. Okay, but suppose that company is working on a large scale of data, and as and you got some malicious thought. Okay, now what you can do with just this little door? You can get the IPs of all the collected connected computers or devices with that network or that Wi-Fi. Okay, मतलब समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? You are went there as a candidate, but you took the access of Wi-Fi. Once you got that access, Wi-Fi access, you got to know what is the default gateway for that network. Are you aware about what is default gateway? Hello. लिसन, सर हैव डिस्कस्ड इट कि हमें सेशन इंटरेक्टिव रखना है, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं है तो मुझे तभी इन्फॉर्म कर दो. सो वी विल डिस्कस दैट थिंग. क्लियर? सो आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे? No, sir. A ओके. network router. क्या? Router. Yeah, router is a device that can be act as a default gateway for networks. Okay. So basically तुम लोगों को ये पता है ना कि तुम्हारा जो भी डेटा है वो पैकेट्स में ट्रांसमिट होता है, फ्रेगमेंट्स में ट्रांसमिट होता है, राइट? एंड ईच फ्रेगमेंट और ईच डेटा हैव द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन इट. या क्लियर? सो बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? राउटर जनरली वर्क एज अ डिफॉल्ट गेटवे बिटवीन टू कम्युनिकेशंस और टू डिफरेंट नेटवर्क्स. ओके, तो डिफॉल्ट गेटवे क्या करता है? इट विल हेल्प्स टू अलाउ the device to get to know the device, other device or destination device of that packet or that device. नहीं समझा? अज्यूम करो कि तुम एक लैब में बैठे हो और तुम देयर इज डिफरेंट लैब. ओके, एंड तुम्हें कोई मैसेज कर रहा है किसी डिफरेंट कंपनी से. ओके, तो क्या होगा? इट दैट मैसेज विल कम टू द योर राउटर, देन out of your through your router that message will be transmitted to the your device. ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो मैसेज सबको ट्रांसमिट हो जाएगा जितने भी डिवाइस उस राउटर के साथ कनेक्टेड है उसमें, नहीं ना? सो देयर इज वन टर्मिनोलॉजी कॉल्ड राउटिंग टेबल. ओके, so what it does in router, there is routing table which used to identify all the devices that are connected with that router. Okay, so router क्या करेगा? Router will work as a default gateway, and router will take that packet and it will transmit that packet to the valid user, valid IP address. Clear? समझ आया default gateway कैसे वर्क करता है? Hello. Yes. Yeah. So with the help of it, what can attacker can do? Once it will get access of your network, he can reach out to your default gateway. क्योंकि अगर 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 assume करो मैं तुम्हारे वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, ठीक है? हम लोग एक ही रूम में बैठे हैं, and I am connected with we are connected with common
कॉमन राउटर. ओके, क्लियर. सो इस केस में क्या होगा, तुम सबके फोन के जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो स्टोर हो गए उस राउटिंग टेबल में. क्लियर. एंड आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट सेम सेम राउटर, सेम एक्सेस पॉइंट ऑफ डेटा और नेटवर्क. क्लियर, समझ आ रहा है ना. सो व्हाट आई कैन डू, I can simply use nmap to get all the data of all the devices. ठीक है. So basically first of all I need to know what is my IP address. Okay. Okay. So basically this is my IP address. Okay. So I can say that मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो कौन सा होगा. सो बेसिकली इन अ नेटवर्क यू मस्ट हैव स्टडीड, अगर तुमने पढ़ा होगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1. क्लियर. आर यू अवेयर अबाउट सबनेटिंग? No, sir. नो. सो देखो, जो नेटवर्क डिवाइस जो हमारा आईपी एड्रेसेस होता है ना, लिसन, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, तो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 2 क्लास में डिवाइडेड होता है. लाइक 2 टाइप के आईपी एड्रेस होता है, वो तो पता है तुम लोगों को, IPv4, IPv6. पर जो IPv4 के आईपी एड्रेसेस होता है वो भी डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. क्लियर. So it can be IP address can be from class 1, class A, class B, class C, class D, class E. ठीक है. But in use there are only 3 classes, class A, class B and class C. So ये जो classes होता है ना, उसमें भी जो IPs होता है वो 2 distributions में divide होता है, नेटवर्क आईपी एंड होस्ट आईपी. ठीक है. मतलब सपोज कि तुम लोग एक आईपी है तुम्हारा 198.168.1.0. ठीक है. So what will that last zero will indicate? The zero is always indicate that the IP address is belong to the network. Hello, आवाज आ रही है? Yes, sir. या. सो जितने भी आईपी एड्रेस जीरो से एंड हो गए ना, वो दे ऑल आईपी एड्रेसेस आर द आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क. वो क्या डिफाइन करेंगे कि हाँ इस क्लास सी जो 198 होगा ना उसका फर्स्ट, लेट मी राइट इट समवेयर. और leave it, never mind. So basically suppose try to imagine it, you have one IP address called 198.168.1.25. ओके. सो इस केस में क्या होगा, जो 198 है वो डिफाइन करेगा कि तुम्हारा आईपी है वो क्लास बी का है. क्लियर. देन उसका सब सब कौन सी मतलब फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसका, वो डिफाइन करेगा क्लास कौन सा है. सेकेंड ऑक्टेट होगा कि उस क्लास में से कौन सा वाला हम आईपी होस्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है. देन थर्ड एंड फोर्थ आईपी विल इंडिकेट कि वो किसके लिए यूज हुआ है, होस्ट के लिए यूज हुआ है, नेटवर्क के लिए यूज हुआ है, राउटिंग के लिए यूज हुआ है. सो जो भी डिफॉल्ट गेटवेज होता है ना, दे विल ऑलवेज चूज फर्स्ट एज अ आईपी एड्रेस. ठीक है, समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. या. सो जो वंस होगा वो होगा डिफॉल्ट, उसके लिए किसके लिए, डिफॉल्ट गेटवे के लिए. जीरो होगा वो नेटवर्क के लिए होगा. एंड सो वी कैन कंसिडर दैट, वी कैन टेक इट एज कि जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा ना वो क्या होगा, 192.1c. हियर इज माय आईपी एड्रेस. ठीक है. फॉर दिस नेटवर्क ENP70S नेटवर्क के लिए ये मेरा आईपी एड्रेस है. क्लियर. सो नाउ आई वांट टू get the all other devices that are actively connected with this network. So हमें information gathering करनी है, right? Are you understanding it? हम क्या कर रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं कि हमारे सेम नेटवर्क के साथ और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है अभी. So there is command call nmap sn space and IP address. तो क्या था हमारा IP address 192.168.1.1. Okay, it can be, we can, अच्छा
Okay, I wrote it wrong spell. Nmap SN1.1. Okay, so basically, what see, this is my default gateway IP address, and currently there is no active host are connected in this system or this network right now. Okay, but if there are active hosts available in this network, क्या करेंगे वो लोग? We will get whole list of IPs that can be possibly connected with this. And there is one more command agar matlab for this gateway. Okay, now if I try it with a full network, अगर मुझे देखना है कि डिफॉल्ट बस राउटर से नहीं बट पूरे मतलब पूरे इस नेटवर्क में कितने आईपी कनेक्टेड हो सकता है, देन आई विल सिंपली चेंज द लास्ट ऑक्टेट विथ अ जीरो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्टेट विल स्टैंड फॉर last octet will stand for network and it will be always zero if we are performing any activities on network. Okay, and slice basically ये 24 हमने लिया है उसकी सबनेट मास्क की इसके लिए, like how many host can be or network device can be connected with it, can connect with it. Okay, so it is a very depth topic. I can't explain you this topic in detail right now, but तुम लोगों को बेसिक आइडिया आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं अभी? हेलो? Yes, sir. हाँ, okay, good. So basically, what will it give? It will give me all the active devices or all the active IPs that are currently connected in this system. And I also got my own IP here. हमने देखा था क्या था हमारा 21 ही था ना? Okay, it was 21. So it is my internet IP and it is my net mask. ओके, एंड इट इज दिस इज माई ब्रॉडकास्ट आईपी. ठीक है, हमने डिफॉल्ट गेटवे का आईपी डिस्कस कर लिया, हमने नेटवर्क आईपी क्या होता है वो डिस्कस कर लिया. नाउ व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ओके, सो जो सबनेट मास्क बनता है ना, सबनेट क्या होता है तुम्हें पता है? सो बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क तो सुना होगा ना तुम लोगों ने, क्या होता है नेटवर्क? हेलो? एक वाईफाई पे कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं? Not I was asking in general term, a connection between two device. Connection between two device can form network. अच्छा जितिन, so basically network क्या होता है? So Like group of devices connected together. it forms network, right? Good. It was quite right. My screen is visible. Hello? No. Yes, sir. Second. Okay. So okay, we have discussed network. What is network? Basically, subnet mask क्या होता है? It will mask your network IDs on of your IP address. ठीक है. So जो ये 255.255.255 है, it is stands for masking of your network IPs. Okay, and जो remains ports होंगे वो किसके लिए allocate होंगे? Host के लिए. Clear? And broadcast. Okay. तो जो लास्ट ऑक्टेट होता है ना तुम्हारे आईपीज का, सो आईपीज आर डिवाइडेड डिफरेंट रेंज. तो कैसे होगा वो? 1.1.1.1 then 1.1.1.0 then 1.1.1.1 1.1.2 ऐसे करके वो जाएगा. लाइक हम अभी कौन सा यूज कर रहे हैं उसमें से? 192 वाला यूज कर रहा है, उसमें 168 वाला यूज कर रहा है, उसमें भी हम फर्स्ट ऑक्टेट मतलब फर्स्ट रेंज का यूज कर रहा है. और हमारा होस्ट डिवाइस कौन सा है? जो लास्ट होस्ट है हमारा 255. सो दैट दिस 255 इज ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर अ ब्रॉडकास्ट. क्लियर? ठीक है, मतलब ये रिजर्व ऑक्टेट्स है. लाइक जो 255 है वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट के लिए जाएगा, जो 1 है वो ऑलवेज डिफॉल्ट के लिए जाएगा, देन जो 0 है वो ऑलवेज किसके लिए जाएगा? नेटवर्क के लिए जाएगा. होप इट इज क्लियर टू यू.
क्लियर? तो ठीक है, बेसिकली हम थोड़ा एनमैप से स्कैन ही कर ले, एनमैप की कमांड से देख लेता है. For information gathering, we will perform this nmap command on this device. It is random device from the same network. I don't have actual idea which device it is, but information gathering में क्या करना पड़ेगा होता है, you have to identify the actual device that you are targeting. या तुम randomly किसी भी device target नहीं कर सकते ना. So you have to identify the actual device that can be you are targeting. So you have to get the access of the exact IP address of that system that you are targeting. So let's see what what are the different nmap commands that are available. So nmap is a tool that can be used for a information gathering. So let's go in detail. So there is command called s. Okay, just let me type nmap. Okay. uh, it is visible to you. So these are sets of scripts that can be accessible with the nmap. Okay, we will just going through basic command of nmap. हम बस basic command ही देखने वाला है इस session में. nmap can be use all these activities to get the scene. So basically ये क्या होगा, ये टारगेट रेट को स्कैन करेगा, मतलब मल्टीपल टारगेट को एक साथ लिस्ट वाइज स्कैन करेगा. ठीक है, एसएन पिंग करेगा, लाइक इट विल ओनली चेक द एक्टिव और नॉन एक्टिव पोर्ट्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, आर यू गाइस अवेयर अबाउट वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी क्या होता है तुम में से किसी को? So vulnerabilities are possibly weak. मैंने बताया था तुम्हें in the starting of session, I guess. So basically, vulnerability Sir, your क्या होगा? voice is breaking. Okay, so now it is audible. Sir, it's still Hello. breaking. Wait. Hello. Now it is audible. Yes, sir. Okay. So you heard about what are these different commands, right? So basically nmap का पर्पस क्या है तुम लोगों को पता चल गया. कि हम क्या करते हैं with help of nmap we are just identifying the weaknesses of the system. एंड कौन सी वीकनेस हम ढूंढ सकते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट कमांड प्रोवाइडेड है. वी कैन यूज मल्टीपल कमांड्स at a same time to get different vulnerabilities of that network or that device that is connected on that network. ठीक है, बेसिकली हम जितनी चाहे ना उतनी इंफॉर्मेशन इस nmap टूल से हम गैदर कर सकते हैं. या इट इज सिमिलर टू zenmap. zenmap क्या होगा, zenmap बेसिकली यूआई इंटरफेस प्रोवाइड करेगा तुम्हें फॉर दिस सेम इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ठीक है, सो वी विल जस्ट, हमने एसएन देखा था ना, सो वी विल जस्ट डू विथ एसएन और हम वी विल ट्राई टू परफॉर्म दिस nmap. ठीक है, एक काम करता है, हम इसको एक वनरेबल वेबसाइट पे ही एक्सप्लॉइट करता है. ठीक है, इट विल बी फन. So there is one texting website called, I guess, Testfire. Okay, so we will be doing our nmap scan on this website. Okay, so now if I will directly write this side, I can get the required scan on this side, but it will be comparatively slow. Okay, so what I can do, I can simply get the IP address of this side by
by doing ns lookup, ठीक है. So basically ns lookup is a command that we are using to get IP address or at least some information about that site. So it is testing site, okay, so it is not that secure. So this is IP address of that site we are receiving here. What we will do, we will simply see, okay, we got here. uh, so these are all the services that are active on this site right now, okay. So it can be considered as a state, like state of that what we are receiving here. We are receiving different ports like port 80. Are you aware about what are the ports? Hello. हेलो, एम आई ऑडिबल? तुम लोगों को पता है पोर्ट्स क्या होता है? सो बेसिकली जो जितने भी जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है नेटवर्क पे, वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे रन करती है, ठीक है. So the different ports are allocated to different services. So there are more than 65,535. Sorry, there are exactly 65,535 ports are currently actively available. Okay, और उन ports में से जो हमारी सर्विस है, जो हमारी ये वेबसाइट है, वो जिसको हमने अभी स्कैन किया है, उसमें बस ये वाले पोर्ट्स ओपन है. कौन से है? HTTP पोर्ट ओपन है, then HTTPS port open है. The port number of these ports are running on this TCP layer, okay, and this is the port number for this service, and 443 is port number for this service, okay. 8080 port number for HTTP proxy, clear. And this is the closed port, this is alternate HTTPS service. Okay, there are tons of ports that are available on network, okay, and our system is only using currently able to scan these ports, and these are the open ports. So basically what attackers do after doing this, so they will try to find the possible vulnerabilities of this service. Like अब मुझे ये पता है कि जो HTTP ports पे जो भी services चल रही होगी, those services are generally vulnerable to eavesdrop, ठीक है. So I can simply scan that website using Wireshark, okay. So मैं उसको simply Wireshark के through भी run करवा सकता हूँ. Like I can see that website as a plain text on my. Are you aware about Wireshark? No. So basically Wireshark is the tool that monitors all the activities that is happening on the network you are connected with. Sir, it shows the sources and destinations as well, right? Yeah, Wireshark. it shows everything. It shows source, it shows destination, it's let we will see it, okay. So it is not visible, I guess. Okay, it is visible right now, I guess. Okay, so it is showing us source, destination, all the protocols which are running on these services. Okay, let me adjust it. Okay, is it visible? Okay, let me stop it and start it again. Okay, so basically it is capturing different traffics at a moment. Those are which are running on my system. Okay, so I can filter it out
to, like I can just type HTTP and I can try to scan the services which are running on the HTTP port. Okay, so there are none of the services which are running on the HTTP port right now, but it is partially open for that. So let's okay, so we got here. I just went to the login page, and what I got this my source address and this destination address which I am targeting right now. Clear? So I can exploit this packet more further. Okay. Um, okay. I can also follow the HTTP streams too. Like what will be the whole get and acknowledge scenario of this. One second. Okay. So is it visible? So what happening here? Like we can trace all the get and acknowledgement scenarios over here. So we are firstly we got this packet, then afterwards we got this, then this protocol started running. It acknowledged that port 18, and these all are the packet we got. Second. Okay, and this is the all information about the different layers where that packet was distributed. Okay, so here we got different arrival time and all the metadata of that package that we are captured. Okay, we got all the rules that are defined for that package. That then okay, and these all are different type of the data we captured with help of that. Okay, and they are all hashed by some minor salt values because it is it was running on this port, right? HTTP port, so it is easy to, it is almost plain text. So you can just remove these salt values and you can get the actual packet data. Clear? So you can see here all set reset activities also happening here. See, the we got our plain text here that HTTP request that has been sent. हमने जो उसको HTTP stream को display करवाया था ना, it was running on HTTP side. That why we got this data without any issues. Clear? So if you trigger the particular packet, then you can just see that data without any restrictions. See, I can see here all the important details without any restrictions. That is why generally web developer use HTTPS structure instead of HTTP. So okay, clear how Nmap works. How we will go through some more commands of Nmap later on. But you got the idea, right? कि वाइशा कैसे वर्क कर रहा है, Nmap का पर्पस क्या है. क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. Great. So now let's are you aware about, okay, we will discuss it later on. I think it shouldn't be. So reconnaissance is clear for you, right? And we also get the scanning part. Like scanning and enumeration क्या होता है? Basically scanning and enumeration क्या होता है? हमने जो एनएम से किया वही हम क्या करते हैं इस केस में, बस हम ट्राई करते हैं कि ओपन डोर्स कौन सा है और वनरेबिलिटीज कौन सी पॉसिबल है.
उस सिस्टम में, सो हम उसको ब्रीच करने की ट्राई करते हैं. सो वी विल डू सम मोर एनफ कमांड्स लेटर ऑन. आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, गेनिंग फेज होता है. इसमें हम क्या करता है, लाइक अगर ओपन पोर्ट हमें मिल गया, हमने उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली, ठीक है, तो हमें उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा ना. सो वी विल ट्राई टू gain the root access of that system. Clear? So that what we do in a gaining access phase. ठीक है. Once we gain that access, हमें क्या करना पड़ेगा. So ऐसा तो नहीं करेगा ना कि कोई नहीं करेगा ऐसा एज अ अटैकर कि if they have access they will also try to maintain that access. ऐसा तो नहीं होगा ना कि some people उन्होंने access ले लिया, then after few moments they will just release that access. ऐसा कौन करेगा. Like they will try to keep that site or keep that authorization for themselves. Clear? So we have to maintain the access that whatever we got. So इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली व्हाट अटैकर डज, अटैकर विल ट्राई टू मैनिपुलेट योर फाइल रजिस्ट्री टू मेंटेन दैट एक्सेस. क्या करेगा वो, काली के रूट एक्सेस में जाएगा, रूट एक्सेस में जाके जो भी यूजर्स होंगे उसके पासवर्ड्स को रिप्लेस कर देगा, या फिर ही विल डायरेक्टली डिक्रिप्ट द पासवर्ड ऑफ योर सूडो यूजर और योर कोड यूजर. ठीक है, जिससे क्या होगा, जो रूट यूजर होगा उसका पासवर्ड वो डिक्रिप्ट कर लेगा. देन ही कैन change that password. Simply he can change that password, or if he want to spy on you, what he will do, he will keep track on that password and he will switch user pseudo user to keep tracking on your activities or registries. Clear? Then covering track. So ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि तुम लोगों ने एक्सेस कर लिया, तुम लोगों ने एक्सेस मेंटेन भी कर लिया, बट नाउ द विक्टिम गॉट द आइडिया कि हाँ किसी ने उसका सिस्टम हैक कर लिया है. सो दैट इज यूजलेस. उसके बाद वो क्या करेगा, सपोज कि यू आर विक्टिम एंड यू गॉट टू नो दैट योर सिस्टम इज हैज बीन हैक्ड. तुम लोग क्या करोगे, वो सिस्टम यूज करना बंद कर दोगे, या फिर उस सिस्टम से तुम पॉसिबली जितने भी वे से तुम कर सकते हो, तुम लोग उस एक्सेस को रिमूव करने की कोशिश करोगे अपनी साइड से. क्लियर? सो दैट इज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि तुम लोगों ने जितनी भी एक्टिविटीज की है उसके पूरे ट्रैक्स तुम कवर कर लो. ओके. एंड फॉर एथिकल हैकिंग यू हैव टू prepare proper report to provide all the steps or all the details to the authorized person. Like these are the vulnerabilities and this how you someone can maintain or gain the access of your system. So you have to prevent that. So you prepare all the reports with each steps that you have done to that attack or that event to perform the backdoor or maintain that access. You have to cover all the tracks and give all the detailed report to the authorized persons as ethical hacker. Clear? Yes, sir. Yeah. So this was about, okay, we will go through about cyber law later on. Now let me show you one more small attack. So you have heard about DOS, right? DOS क्या होता है? Basically DOS is a attack. Okay, wait, क्या होता है DOS? Any of you? It's like sending a lots of packets on one network and resulting it in crashing. Yeah. So basically dot DOS होता है ना, वो always malicious intent के लिए यूज नहीं होता है. So basically DOS का पर्पस क्या होता है कि वो किसी भी जो हमारा विक्टिम है उसके सिस्टम को टेम्पररी क्या कर देगा, शट कर देगा. जिससे क्या होगा, जो जेन्युइन यूजर्स है, जेन्युइन पर्सन्स है, they won't be able to access that site or server for the moment, or it will be just done to increase the time complexity of the website, जिससे वो सर्वर और जो बर्डन है वो ज़्यादा efficiently हैंडल ना कर पाए. समझ आ रहा है? Suppose there are two companies, okay, and both companies are
वर्किंग ऑन द सेम जॉब, मतलब दो कंपनियां दोनों सेलिंग का काम कर रही है, ठीक है। सो both are competitor companies. So in that case क्या होगा, what will attacker do? Attacker will try to damage or make the opponent company more costlier, मतलब ऐसा कुछ करेगा ना जिससे जो अपोनेंट कंपनी है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाए। अब लॉस करने के लिए दे हैव टू वेज, वो क्या कर सकता है, वो अपनी कंपनी को ज़्यादा बेटर कर सकता है, या फिर दे कैन ट्राई टू decrement the user experience for different companies. Suppose there is company A, company B. Company A बहुत अच्छा perform कर रही है, company B is lagging somewhere, but company B can't compete with directly with company A. So company B क्या करेगी? He will try to make or try to perform some events that will इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंपनी ए, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकती है जिससे जो सर्वर की कॉस्ट है वो कंपनी की बढ़ जाए। नाउ डायनामिक हैंडलिंग, ये तुम लोगों ने सुना होगा टर्म। हेलो, आर यू अवेयर अबाउट टर्म डायनामिक हैंडलिंग? सो बेसिकली क्या होता है कि इन नाउ डेज जो कंपनीज होती है ना, देखो पहले क्या होता था कि जो भी कंपनी होती थी उनके जो सर्वर होते थे वो फिक्स होते थे, लाइक दे हैव फिक्स स्टोरेज, कि हाँ इनके पास इतना ही सर्वर अवेलेबल है, और उनमें उस सर्वर में से वो इतना ही पोर्शन पर्टिकुलर वेबसाइट को अलोकेट करते थे। उस केस में क्या होता था, अटैकर क्या करता था, अटैकर उन सारे सर्वर के जितने भी पेज है उसको जैम कर देता था विथ हेल्प ऑफ डॉस, जिससे क्या होता था वो सर्वर क्रैश हो जाते थे, लाइक वो सर्वर सारे फुल हो जाते थे, जिससे क्या होता था ऑथोराइज यूजर जब भी उस साइट को एक्सेस करने की ट्राई करता था, उस केस में क्या होता था, द ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वो अवेलेबल ही नहीं है ना, क्योंकि ऑल द सर्वर, ऑल द सर्विसेज ऑलरेडी इज टेकन बाय सम बोट यूजर्स और बोट अटैकर्स, अटैक पैकेजेस, ठीक है, जिससे क्या होता था ओरिजिनल यूजर्स उसको नहीं ले पाता था। बट इन नाउ डेज वी यूजिंग डायनामिक सर्वर और डायनामिक क्लस्टर्स, जिससे क्या होता है कि अगर एक सर्वर का क्लस्टर फुल भी हो जाए तो क्या करता है, they directly extend other cluster for the same service, जिससे क्या होगा कि जो सर्विसेज है वो स्मूथली चलती रहेगी। बट इस केस में क्या हो जाएगा, जो कंपनी ए है उसको कॉस्ट बढ़ जाएगी, ही इज पेइंग फॉर क्लस्टर ए दैट इज ऑल एंगेज बाय द वोट यूजर्स, जिसमें एक भी पर्सन, एक भी यूजर है वो जेन्युइन नहीं है, तो उसका वो स्पेस तो वेस्ट ही जा रहा है ना, एंड ही इज यूटिलाइजिंग डिफरेंट स्पेस फॉर अ जेन्युइन यूजर्स, जिसमें से सपोज जेन्युइन यूजर्स 2-3 भी हो, 2-3 हजार भी हो, पर क्लस्टर तो पूरा लोकेट होगा ना, एंड उस पर डॉस अभी भी हो रहा है, मतलब वो क्लस्टर है वो भी फुल होगा विथ अ फेक अकाउंट, फेक इससे, जिससे उसको क्लस्टर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो दैट्स हाउ आल्सो अटैकर्स कैन हाँ do DDoS to decrease the performance of any events. Okay, ठीक है। So now we will seeing DDoS on that same site. Okay, so for DOS there is also one available repository for DOS, but generally attackers क्या करता है, they won't use pre-created repositories, because क्या होगा अगर तुम pre-created repositories यूज करोगे वो लिमिटेड होती है, इट इज डिजाइन और इट इज क्रिएटेड टू ओनली परफॉर्म और टू ओनली आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ द इवेंट, कि वो एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है वो इसी के लिए होता है। But if you actually want to perform this DOS and this phishing or these attacks, you have to use your own script, or you can just modify the script that are stored in those repositories. ठीक है, तो तुम उसको अपने हिसाब से manipulate कर लो, and then you can use those scripts for performing DOS. Okay, so let me see where I have stored. Or we will just clone one DOS repository if I can't able to find it. नहीं,
Okay, so it is located at desktop. So I will just simply open this repo or external. Hmm. So these all are the files that are contained by this dot file. So basically it is Python based script. Okay, you can see here, you can identify it because of .py extension. So now I have to make sure which Python version I have available right now. So for that I will do Python. Okay, so it can be, let's, okay, so basically Python 3 is currently available in my system. Okay, so if I want to run this Python file, I have to write, and what was the name of the file? Okay, so this is my DOS the Reaper instance, and these are all the services that I got because we are with help of this script. Like I can try help to get the command idea. Okay, so this is for server, this is for particular port if I am targeting particular port of that vulnerable site. This is for tweeting, and this is turbo. It is default, takes the ports from port 130 135 or 143. Clear? So what we will do, we had one side here. Where was it? Yeah, here. So this was the IP address of that side. I will copy this IP address and I will go here. Now I want to run this script. What was the script? It was here. Firstly, let me copy this IP. Okay. I am not typing anything randomly. It is here. Like they already instructed us how to use this this directory or this repository. Okay. So what we have done, we have initialized Python, then the script, then the IP address we are targeting. But see here they told us like you have to mention the server. Okay. We have to mention the server IP address instead of the website IP address. Yeah. So we will take the IP address of server. What was it? It was like this. So we will just go there, server, and then we mention server IP address. Okay, let's directly attack on this server. Instead of defend any ports, we will target almost all actively available ports of that site. So, and I will simultaneously start scanning this attack. So we can, okay, these are all the packets. Wait, we are not stopping it. So you can, okay, let me remove this filter first of all. Okay, and let me restart it. Continue without saving, and okay. So you can say there is lots of packages that are running right now simultaneously. Okay, so these all the sending and acknowledgements are because of this our DOS attack. Okay, see, so these all are the requests that is sent by our attack. Let me close it right now. Okay, so that's how our DOS works. Okay, what happened? We have sent multiple packages over that server to corrupt that server temporarily. Clear? कैसे work कर रहा है पता चला? And these are those packages which we have sent.
You can trace them if you want, but I don't think we need to do it right now. So you got idea about how Wireshark works or how DOS working? Clear? हेलो, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yeah. So that was about DOS. So now, if we will see one more topic briefly, what was it? It was gaining access, right? So for gaining access, we can use SQL map or simply SQL injection or HTML injection to perform this type of attacks for gaining access. There are multiple different attacks too, but in past, when websites are not that dynamic, mostly websites are created using simple HTML and CSS, right? So at that time, what your attackers used to do, they used to inject their own script into the user's system to get the access of it. So SQL attack is one of the type of it. So basically क्या करना है हमें? SQL तो बताना क्या है? हेलो हेलो, are you aware about SQL, structure query language? Okay, so basically तुम्हारा जो वेबसाइट का डेटा है वो हम एक्सेस एंड मैनेज किस से करता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से करता है. क्लियर? सो बेसिकली जो भी डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है ना, those all data can be retrieved and accessed with help of this SQL queries. So when we enter some ID and some passwords here, क्या होगा? वो SQL query रन होगी बैकएंड में समवेयर, जो क्या करेगी, जो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी लाइक सिलेक्ट यूजर नेम इक्वल इक्वल टू जो भी हम यहाँ डालेंगे वो, एंड पासवर्ड इक्वल इक्वल टू जो हम यहाँ पे डालेंगे वो. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, then and then condition true होगी, then and then we can able to access that systems. but अगर ऐसा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? They will not allow us to access that website. ठीक है? So to bypassing it, अब हमें क्या करना है? हमें बस क्या करना है? For SQL injection we have to insert some query that way कि वो कंडीशन ट्रू कर जाए, मतलब वो कंडीशन ट्रू हो जाए. ठीक है? So कंडीशन ट्रू कब हो सकती है? Can anyone tell me? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. हाँ. सो बेसिकली कंडीशन ट्रू कब होगी? जब कोई ऐसा सिनेरियो होगा जो ट्रू हो जाएगा, राइट? इट शुड बी ट्रू फॉर यूजर नेम एंड इट शुड बी ट्रू फॉर द पासवर्ड. क्लियर? So there is one scenario. It is true for every event. जनरली है ना, जितने भी अटैकर्स होते हैं वो यही क्वेरी रन करता है फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन. ये दैट्स वाई तुम लोगों ने भी देखा होगा कि ऑथेंटिकेशन के लिए वो जनरली अब क्या यूज कर रहा है? दे आर यूजिंग only specific character for logins. They are not allowing all the characters for the username and passwords. They are restricting some of the characters that can be used for the attacks. So I just visible है मेरी स्क्रीन तुम लोगों को? क्लियर दिख रहा है? हेलो. Yes, ओके. sir. तो हाँ, सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक कोटेशन दे दिया जो हम जनरली एसक्यूएल क्वेरी में लिखते हैं. ठीक है? व्हाट ही विल डू, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आगे वाली चीज़ें हैं, हाँ, दोज आर एक्सेप्टेड, ऐसा हो जाएगा. आफ्टरवर्ड्स हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता है कि हाँ वो वाला ट्रू होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 1 = 1. अब हमें पता है 1 = 1 हमेशा क्या होगा? ट्रू ही होगा ना, क्योंकि 1 की वैल्यू कब हो रही है? 1 की वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है. एंड दिस कंडीशन इज ग्लोबली ट्रू फॉर एनी इवेंट. समझ रहा है ना? हाँ. सो हमने क्या किया, हमने उस वाली क्वेरी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए. बट अगर उसकी जगह ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो भी क्या करना है, यूजर को हमें एक्सेस अलाउ करना है. एंड आई डिड 2 हाइफिन्स, मिडल फिन्स. ठीक है? जिससे क्या होगा, डैश डैश. ठीक है? इससे क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेरी है वो क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा. So and if I write this, I just typed random password here
and I will try to log in into this side, क्या होगा, it will give me access of this side, मतलब वो मुझे allow करेगा to access the admin rights of this instance. क्या किया हमने, हमने बस एक क्वेरी चलाई और उसको हमने ट्रू डिक्लेयर कर दिया फॉर दैट इवेंट. क्लियर? So that's how SQL injection works. ठीक है, and it is not that easy to do this SQL injection in every environments. Okay, हम बस टेस्टिंग फेज के लिए कर रहे हैं जिससे तुम्हें पता चल जाए. जनरली SQL इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है, इट इज ऑलवेज डन विथ अ SQL मैप. SQL मैप से हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वनरेबल चीज़ें कौन सी है, लाइक कौन से वनरेबल डायरेक्टरीज अवेलेबल है तुम्हारी वेबसाइट में, एंड देन वी विल टारगेट दोज पर्टिकुलर डायरेक्टरीज ऑफ डेटाबेस विथ हेल्प ऑफ SQL. क्लियर? होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ आया होगा. हेलो? Yes, sir. Yeah. So let's move further. So these all are the different phases. Okay. So password attack हो गया. Malware and ransoms. So malware क्या होता है? वो basically kind of malicious softwares होता है. Those malwares can be trojans and worms. तो ट्रोजन्स ये क्या करता है, बेसिकली तुम्हारा डेटा है वो अटैकर को सेंड करता रहता है बार बार. एंड ट्रोजन्स क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है तुम्हारे सिस्टम में जब तक तुम्हारी सिस्टम क्रैश नहीं कर जाती. नाउ what is ransomware? Basically the when attackers encrypt your whole system with his private key or public key, and he will prevent you from accessing your own system, and for releasing that system he will ask for or charge for some ransom from you. Okay, so that can be considered as a ransom ransomware. So तुम लोगों को, हाँ, तो तुम लोगों को पता होगा कि रैंसमवेयर क्या होता है. हेलो? मतलब तुम लोगों ने रैंसमवेयर अटैक कहीं ना कहीं तो देखा होगा रियल वर्ल्ड में भी, कि कोई किसी का इंस्टाग्राम हैक कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ पे मी दिस अमाउंट, आई विल रिलीज ऑन इंस्टाग्राम. या फिर कोई जो ये जनरली कहाँ यूज होता है, जो मेन जो लार्ज कंपनीज होती है जिनमें से किसी भी हायर पोजीशन एंटिटीज के पास बहुत क्रूशियल डेटा स्टोर होता है उनके सिस्टम्स में. उस केस में क्या करता है, जो अटैकर्स होता है उन सिस्टम्स को करप्ट कर देता है, एंड दे charge some ransom from those high position persons to release their data. Clear? So that's how ransom work. Web application attacks कौन से होता है, जो हम कर रहे थे ना अपने अपनी sites and with help of nmap. It was kind of attack to gather the information from the website. Okay, हमने NS lookup से क्या किया, वेबसाइट का IP लिया पहले तो, ठीक है. Then what we will done, we will try to identify all the possible vulnerabilities of that or the services that are running on that system. ठीक है, एक काम करता है, there is one more command I want to tell you. So that is nmap command to get all the actively running services of the system. ठीक है. So what was the IP address? Okay, so this was the IP address of that website. एक सेकेंड. Okay, I guess we are done from my side. Like time is limited for me for this session, but I will show you like these few commands for nmap services.
Okay, so let me take here this IP address, and what I want to target all the ports of these websites. ठीक है, मतलब जितने ports available है मुझे सबको scan करना है. It is comparatively slow, and I also want to get operating system, like which version and which operating system this website is using. Clear? So that's why I use this command -o. Okay, एक second. Okay. So basically, if I run this command, they will show me the privilege issues. Okay, because this command is crucial command and it is bit harmful command for the any sites. Okay, so I have to write sudo before using this command to get the root permission to perform this command. Okay, so I will write sudo in this command and I will run. I will type my sudo password. Okay, and it will start scanning these all the services, ports, and OSs that is used by this IP or this site or target. Okay, so basically, if I want to store all these files or logs in some text file, what I can do, I can write one command afterwards here, like -o and on, and then name of the file which we want to saved, और मतलब हमें जिस फाइल में हमें स्टोर करना है सारे लॉग्स को, उस फाइल का नाम डॉट टेक्स्ट फाइल करके हम दे सकते हैं. तो वो क्या करेगा, जो लॉग्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो उस टेक्स्ट फाइल में शो हो जाएंगे और हाँ स्टोर हो जाएगी. So it is taking bit time, it is slower. So if you want to scan in a faster manner, what you can do, you can write command nmap capital A or capital F, then IP address. It will we do aggressive scan on that IP. But aggressive scan are harmful because क्या होगा कि उन केसेस में जो तुम्हारा एंटिटी है, जो भी तुम्हारा विक्टिम है जिसको तुम टारगेट कर रहे हो, उसको अलर्ट जाएगा. एंड कुछ फायरवॉल्स होती है जो क्या करती है, एग्रेसिव स्कैन को डिटेक्ट करती है और उसका अलर्ट जनरेट करती है फॉर एनी सिस्टम. So in that case, you can get caught during that attack. Okay. So let me ask you, is there any doubts till now? Okay, ransom, blackmail. Okay, sir will discuss it with you for certificate form. So anyone have any doubts till now? Our site is getting scanned. Till then we can discuss those doubts if you have. Okay, then I should take it as no one have any doubts. So basically, what will this give? It will give us the version of the services and all the ports that are open, and the which version or which OS that is used by this site. Okay, so we can exploit particularly vulnerabilities for those sites only. Clear? So I think I don't have much time right now, and sir will be carry this session further on. Ethical hacking roadmap. You can take that roadmap from sir. So that is all from my side. Thank you for being interactive and attentive for this session.